Have you ever seen any person eat grass or leaves of plant? नहीं, क्यों नहीं? क्यों? Digest नहीं होता, right? But at the same time, rice. Most of us we eat rice, right? Now, what's the difference? Rice is also glucose, and khas pata, leaves and grasses are also glucose. Then what's the difference between these two glucose? It's about its polymerization. Let's understand a bit. Quite interesting, isn't it? कि हम एक चीज़ हजम कर सकते हैं, दूसरा नहीं, जहाँ की दोनों भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है. Let's understand a bit about cyclic structure of glucose. All right. Now, what I want you to focus on is what is the difference. If you see, the entire structure is the same. There is only one difference, and that is, if you can locate, check out this COC bond, carbon oxygen carbon bond, and this hydroxide is niche. That is called as alpha glucopyranose. Whereas when we check this out, COC वही है जो वहां पे था, but OH ऊपर. Now we call it as beta glucopyranose. ऑलराइट, ये अब हम मॉडल से अंडरस्टैंड करेंगे. आपको बीटा ग्लूकोज में COC और ये OH को फोकस करना है. ये OH अटैच टू कार्बन, ये देखिए ऊपर की तरफ है, राइट, इन दिस ग्लूकोज. बाकी एंटायर स्ट्रक्चर इज द सेम एज दिस. अब जब यहाँ आते हैं, दैट इज अल्फा ग्लूकोज. अगेन ऑब्जर्व कीजिए, COC यहाँ पे OH नीचे है. ऑलराइट, दिस इज डाउन. ऑलराइट, COC और ये OH नीचे है. ऑलराइट, सी दिस इज व्हाट आई एम saying, COC और ये OH नीचे है. वैसे ही यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे COC है और ये OH ऊपर है. वैसे COC है, ये OH ऊपर है. नाउ सो जब ऊपर है वी कॉल इट एज बीटा, जब नीचे है तब वी कॉल इट एज अल्फा. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीमराइजेशन. जब सिंगल है, सिंगल यूनिट है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, वी कॉल इट एज मोनोमर. मोनोमर मींस वन. ऑलराइट, और जैसे वो अटैच हो गया वाया बॉन्ड, वी कॉल इट एज पॉलीमर. ऑलराइट, सो दिस इज पॉलीमर, दिस इज मोनोमर. Now let's talk about polymerization of beta glucopyranose. Beta glucopyranose में OH ऊपर है, इसके लिए that's why I've shown here OH ऊपर, and it's getting polymerized. It's getting polymerized, so it gets linked each other with bonds. Alright, and what we end up with is after polymerization is cellulose. Now cellulose मतलब it is present in grass, plant leaves and all, and we can't digest, but goat, buffalo, cows they can digest. Why? Because they have cellulase enzyme in them. Alright, now when we take this, that is alpha glucopyranose, the structure which we saw. This was below here, COC below. So I've taken OH down here. So these all gets linked up. This all gets linked up to form a polymer of alpha glucopyranose. And when this happens, what we end up with is starch. Starch we can digest because we have amylase enzyme in us. Quite interesting, right? Stay tuned.